को उसकी जगह के सारे, जैसे मान लो यहाँ भोपाल में सांची है, अगर सांची घूमने जाएगा और वहां पे जाए और ना उसके पास मेरे साथ कोई गया और मेरा मूड नहीं है पढ़ने का कि क्या क्या है इधर मॉन्यूमेंट पे, मैं पढ़ के बताऊं उसको, तो वहां पे ब्रेल का बोर्ड लग जाए एक, जिससे वो खुद पढ़ ले, आपकी उस जरूरत नहीं है उसको की। और उसके रास्ते का एक रास्ता होता है, उनके टाइल्स आपको लेके जाती है वो, तो वो आपको लिया, जैसे सांची में अगर आप जाएंगे तो सांची में लगी हुई है टाइल्स, पूरे रास्ता आपको बताती है। आप जितने भी आगरा के मॉन्यूमेंट चले जाएं वहां सब आपको ब्रेल में मिलेगा। तो आपको ये छोटे छोटे चीजें करनी पड़ेंगी कि ये हमारे दोस्त आएंगे बड़े होके, वो इधर आएंगे तो उनके लिए हमको इंतजाम करना पड़ेगा। अगर ऑफिस में काम करेगा तो ब्लाइंड आएगा तो उसके लिए सॉफ्टवेयर हमको डालने पड़ेंगे, उस तरह के चीजों के। तो हमको ये सारी चीजों की तैयारी पहले से रखनी पड़ेगी कि कोई भी आ सकता है कभी भी। और हमारे घर में भी, मैं अपना बताता हूँ, मेरे घर आ गई एक दिन एक लड़की, बहुत सोचा था बच्चा नहीं चाहिए, वाइफ भी तैयार थी नहीं चाहिए, अब एक दिन आ गई तो मैंने अगले दिन गुलजार साहब को फोन किया। अच्छा, गुलजार साहब हम लोग करीब 35 साल से काम कर रहे हैं, हमारे लिए लिखते वही हैं सब, क्योंकि बाकी लोग पैसे मांगते हैं और टाइम भी बहुत ज्यादा मांगते हैं, इनसे रात को बोलो और सुबह मिल जाती है हमको चीजें। तो लड़की आ गई तो मैंने उनसे फोन किया, तो मैंने कहा लड़की आ गई, नाम बताओ। तो ऐसे कैसे आ गई? मैंने कहा आ गई, अब क्या करोगे? तो कहते कि एक नाम फोन पे नहीं रखे जाते हैं, अब आ जाओ, कल आ जाओ। तो बॉम्बे पहुंचा तो उन्होंने प्रार्थना मुदगल मेरे को बताया कि प्रार्थना मुदगल अच्छा लग रहा है मेरे को। मैंने कहा ठीक है। मेरा दोस्त साथ में बैठा था, उसने कहा अनिल भाई एक दो और पूछ लो। तो मैंने कहा पंडित के पास थोड़ी आए कि 3 नाम ले लो और फिर आप उसको करो। तो हमने उसका नाम प्रार्थना रखा। तो प्रार्थना जब हमारे घर आई तो रात को वो लाइट नहीं बंद करने दे रही थी, और लाइट जैसे ही बंद करते थे वो रोने लगती थी। अच्छा, मैं भी इतने साल से काम कर रहा हूं, लेकिन कहीं किताबों में नहीं लिखा है कि अगर बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है और आप लाइट बंद कर दोगे तो उसका वो कम्युनिकेशन भी खत्म हो गया जिससे वो देख के कम्युनिकेट कर रहा था चीजें। तो सुबह हमारा जर्मन शेपर्ड डॉग जो है वो खूब कूद रहा था उसके ऊपर, क्योंकि बच्चा देखा उसने पहली बार घर में, तो खूब खुश था। तो मैंने माँ को बोला कि माँ ये इसको सुनाई नहीं देता है। तो हम लोग उसको बेरा टेस्ट, एक उस टाइम टेस्ट था, वो भोपाल में नहीं था, तो हम लोग इंदौर गए टेस्ट कराने। तो उसको मैं आया कि प्रोफाउंड डेफ है वो, और इसलिए वो रात को लाइट बंद नहीं करने दे रही थी। फिर हम लोगों ने उसका जितनी जल्दी हो सके, अगर कोई बच्चा कहीं मिलता है तो आप उसको उसकी जांच कराएं और उसका जो जो चीजें हो सकती है करें, बजाय कि कई बार डॉक्टर भी कहते हैं कि नहीं साहब कई बार बच्चे देर से बोलते हैं, आप नहीं, टेस्ट करा लीजिए आप पहले, ताकि वो टाइम वेस्ट नहीं हो हमारा। तो हम लोगों ने उसका किया और उसका कॉकलियर इम्प्लांट हुआ। और आज वो, पहले तो उसके साथ ये था कि डॉक्टर को बोलते थे खूब बकबक करो, खूब बात करो उसके साथ में। कॉकलियर इम्प्लांट सुना है आप लोगों ने? ये कट करके इधर से और एक चिप अंदर लगा दी जाती है, तो और एक मशीन उसका हियरिंग एड होता है, वो यहाँ लगता है, वो कान से नहीं सुनती, वो यहाँ से सुनती है। अब 6 साल 7 साल हो गए उस बात को, और अब उसको हमको बोलना पड़ता है कि थोड़ी देर चुप रहा कर यार, मतलब फुल टाइम चटर पटर रहती है और आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि इसको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है बस। लेकिन यह है कि उन जो 6 सालों में मेरी माँ और हम लोग किसी बर्थडे में किसी उसमें नहीं गए कि उसकी क्लास नहीं छूट जाए, वो रेगुलर रहना है आपको, सारी चीजें वो करनी, मेहनत बहुत है सब चीजों में। थैंक यू सर जी, आपका विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल, बहुत कृतज्ञ हम सब रहेंगे कि आप लोग जो काम कर रहे हैं। अब हम अपने तीसरे पैनलिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। मिस नीलेस्वा एंकानी जी साउथ अफ्रीकन टूरिज्म की हब हेड हैं और उन्होंने वहां टूरिज्म और यूथ एम्पावरमेंट के विषयों पर बड़ा उत्कृष्ट कार्य किया है। मैम, नाउ कमिंग टू यू, a very defining moment in India's freedom struggle was when a young Indian man, a youth, was thrown out of a train in Pietermaritzburg, South Africa. Since then, man, the destinies of South Africa and India have been quite alike, and we've always looked to each other for inspiration. We would love to know what work has South Africa done in the tourism sector, which has also involved the youth and worked towards their empowerment and also inspired them
towards working for social cause now? Thank you. Namaste. So let me go a step back, just in case everybody doesn't know who that young man who was thrown out of the train in South Africa. I was fortunate to be born in 1970 in a way. And we came to hear about a young man, Indian gentleman, wearing white cloth, just like the people in front. That man came looking for opportunity. He was an attorney. His name was Mahatma Gandhi. That man gave South Africa a chance, just like India does, just like the people here. That man had never met Nelson Mandela, and he gave the baton to Nelson Mandela to continue the spirit of Ubuntu. Ubuntu in our culture means humanity. Tourism is a sector. Let me give you just a quick glimpse of how history defines us. I hope I'm speaking slow enough, and I apologize that I don't speak Hindi, but hopefully in 10 months' time I'll be fluent. 28 years ago, is there anybody who's 28 in the room? Can you raise your hand? 28-year-olds? 28. 28 years ago, it was illegal for a black woman like myself to come to India just because of the color of my skin. 28 years later, I'm sitting here as the head of tourism. Thank you. So for us, tourism, we were very blessed. We met with the tourism ministry, chief minister yesterday. We're going to be discussing some work with the sports. Tourism is about storytelling. Tourism is about bearing your soul. Tourism doesn't need degrees, like you don't need a doctorate, right? You need the people in this room, youth, educated, conviction, faith, belief, patriotism, love, and respect. Because what it does is when I come here and when I landed, I saw the soul of Bhopal in the people that I met. That's tourism. So for us, very simple. You see the gentlemen that are taking pictures, right? All the camera guys. When we do tourism, it's anybody under 35 that would be doing that job. When we go overseas, or when people from South Africa come to Noida, Sate, we give opportunity to the youth. We pay for them to come to platforms. Because we understand the value of a youth. Nelson Mandela says, you are the rock of Bhopal. Right? Without you, there is no Madhya Pradesh. There is no India. Right? Time. Time is, you've got time. I'm 52. My time is running out. So for us, tourism is about film opportunities, tourism opportunities. One of your greatest assets, and it's here in Bhopal as well, and it's in the whole of India, is food. When I landed here, upon going to the ministry, I got given this beautiful scarf. But I couldn't find a shop at the airport that sells this. I couldn't find a shop. When I landed and I wanted to buy something, I saw a bottle store. So for me, please, take the opportunity. Use your spaces. The airport should have a youth zone retail space. It's owned by them. We invest with them so that we give them. Most youth in my country, we have a population of 57 million people. You are 75 million people as a state. We are a country, 57 million. You're a state of 75 million. My country could fit here
and there could be space. For us, social development has so many different meanings. We've got a very high unemployment rate in my country. It's about 40%. 40% we've got youth. You're one of the most educated countries. Guess what? Microsoft is led by an Indian. It could be any one of you. Any one of you. But it's got to start here with simple things. Do a food zone, food market. When I leave, you've got 2 flights that fly out of India. One is at 8, one is at 10. Between 8 and 10, your airport is buzzing. Create a food zone. I was just watching your beautiful video. How amazing it would be for that video to be shot in Bhopal. How amazing that the crew that shot that video is youngsters. They provided your food, they provide your makeup, they do the hair. What I understand, and I stand to be corrected, you don't want much. You just want an opportunity, right? They just want an opportunity. So tourism for us it's about dignity. Let me explain why I say that. Every single Indian that comes to my country feeds 8 people. I don't know how to say that in Hindi, and maybe it should be translated. Every single Indian that lands in my country. So if this room was 1,500 people and you landed in my country, take 1,500, multiply it by 8. Tourism is about dignity. Right? So that's what we do for tourism. Yes, ma'am. Yeah, I was just telling you, it wasn't like I was paid to do that. Got you. Yeah. So I was shooting for a film with a lady called Tamanna Bhatia. I was doing a small role in that film. And I was given a little amount for playing a role for 3 days. And before going there, I was very sure that the people who broke the backbone of my country, that's the place that I want to promote my handlooms. Good job. Good job. Story to be told. And I employed 11 people who are all Indians. Nice. And all the students who are studying here, and whatever amount I got was paid to the students of India out there and shot in that location. Thank you. And I'm using the example because when we sat in the tourism meeting, for a minute when my eyes closed, I thought I was in another country. When I saw the beauty of Madhya Pradesh, when I saw the beauty of Bhopal. Here's the thing about the youth. I am a mother to a 29-year-old. He's just come back from Japan. He spent about 2 years unemployed. And I said to him, my boy, time, education, patience will get you through. One of the things that I love about your country, it makes me love you, and it frustrates me sometimes, but it teaches me your humility. No one in the world has the humility of an Indian. Nobody. And nobody can take it away because it's been bestowed upon you by grace and favor. And nobody should ever take that away from you. It is a currency. Just like I was thinking this morning, what do I call the youth of India? You're a currency. You're bigger than the rupee. You're bigger than the dollar. You're bigger than the pound. Because nobody can trade your worth. And that's what tourism is about. I don't know if I've answered you. I think you've answered us very holistically. I was planning to ask a follow-up question, but I think your answer included everything that we wanted to know, and it was a pleasure hearing you, ma'am. Now, can you afford me 2-3 minutes? You see, for me, and I apologize, when we got the invitation to come here, I thought, okay, this is fantastic. I'm coming, and here's a
Chief, it was raining yesterday. Was it yesterday, Mitali? It was raining. Here's a 60-year-old, you and I think we were there. It was pouring with rain. Here's the chief minister, got his hands dirty, and he went and planted a tree. Right? My question then is, where was the audience? And I know that you are busy. Some of you were here. I just want to add on to this fantastic young gentleman's statement to say, when he said, respect that those who lead you, just a few motivational words. I want you to own your space. I want you to claim your space. India, no matter what state you are in, be it you're in Noida, you could be in Gujarat, you could be Surat, you could be in Delhi, you could be in Mumbai, you could be in Pune, Ahmedabad. One of the greatest things I also think you have is the ability to be the truth of the world. Now you're probably asking, what does that mean? There is no other country in the world, and you are an editor and you've traveled. Show me a country where rich and poor have no fencing, where rich and poor are not separated by a fence. What happens in most of the worlds? Townships or shacks or slums are hidden, right? You get to London and you see beautiful palaces. You get to even sometimes my country, you can see the poverty, but you can, where beauty is in the rich. You are absolutely the truth of the world because you live cohesively, right? And there's no fear. I walk around in Mumbai at 1 o'clock in the morning, and I'm not fearful. That's because of the people who you are. Secondly, your humility I spoke about, your entrepreneurship. You are born to be business people. I always ask my colleague, how do you do it? When I go into a meeting with an Indian, I start sweating because I know it's going to be a negotiation. I start sweating. I'm like, oh my God. You're going to outplay me, outnumber me, outdo me. That's besides the cricket that we share a commonality. But you're born with it. Use it. Own it. But do it with integrity. But also for you guys, you have a responsibility. You have been led by your forefathers. My question then will be, what are you going to be remembered for? Are you doing voluntary work? Are you giving to the less who have? Because there's always somebody who has less. Are you claiming your space? But the last thing I want to say, we have something that we say in my language. Italy always knows what I'm about to say. It's about Ubuntu. Ubuntu is humanity. We say in my language, Umtu, Ngumtu, Ngabantu. I will say it again. Umtu, Ngumtu, Ngabantu. It means I am who I am because of others. To end of your statement, we are a South Africa because of you. Thank you. Thank you, ma'am. I don't think so there's an eye left unteared, ma'am. We're just looking for tissues. Thank you for that soulful and inspiring speech. Thank you so much, ma'am. Up. परमिशन नहीं मान रहे हैं, इनसे पूछें ना। ब्रह्म कुमारी संस्था मैडम को गिफ्ट देना चाह रही है, बुला लें क्या? पूछ लो आप। अब हमारा बहुत ही खूबसूरत एक पैनल डिस्कशन हो चुका है। समय का थोड़ा अभाव है, ज्यादा प्रश्न नहीं ले पाएंगे, पर एक या दो प्रश्न हमारे ऑडियंस
एक पहला प्रश्न हमारा आ गया है, सौरभ सर आपके लिए है। चंद्रशेखर उपाध्याय जी हैं मुरैना से। हेलो हेलो। चंद्रशेखर जी पूछते हैं आपसे, सोशल मीडिया का स्थानीय भाषा में शिक्षा लोगों को स्थानीय भाषा में सोशल मीडिया से कैसे प्राप्त हो सकती और इसमें युवाओं का क्या रोल हो सकता है? युवा आपके इर्द गिर्द जो किस्सा गो हो, आपके गांव में कोई बुजुर्ग हो सकता है जो हो सकता है फोक बहुत अच्छा गाता हो, आपकी दादी बहुत अच्छी कहानी सुनाती हो, आप उस सबको डॉक्यूमेंट करिए और सोशल मीडिया पर अपलोड करिए ताकि वो प्रिजर्व हो जाए। ये बहुत जरूरी चीज है। सर आप ही यहाँ पे सबके अटेंशन के वो सेंटर ऑफ अटेंशन। एक प्रश्न और आपके लिए, वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी का प्रश्न है, समाज निर्माण में पत्रकारिता की क्या भूमिका है? संक्षिप्त। ये इस पे सुबह से लेकर शाम तक बात हो सकती है और सैकड़ों बरस से बात हो रही है। पत्रकार का काम है कि आपको खबरदार रखे और आपको एक बेहतर नागरिक बनने में मदद करे। आपके भीतर वो बेखौफपन, वो निर्भीकता पैदा करे कि आप सवाल पूछ सकें। एंड एज आवर फ्रेंड फ्रॉम साउथ अफ्रीका राइटली सेड, क्लेम योर स्पेस एंड बी पैशनेट अबाउट योर कंट्री। तो पत्रकारिता का काम है कि इन चीजों को थोड़ा सा और बढ़ाए। और जो सबसे जरूरी काम हमें लगता है वो ये है कि ज्ञान को मजेदार और सरल बनाए। वी हैव टू लीड फ्रॉम डिलाइट टू विजडम। इफ आई कांट एंटरटेन यू, कांट एंगेज यू, आई वोंट बी एबल टू एजुकेट यू। सर थैंक यू सर। अब आज का हमारा पैनल डिस्कशन सेशन यहाँ समाप्त होता है। समापन से पहले मैं चंद्रशेखर आजाद जी की जन्म तिथि पर हम यहाँ बैठे हैं, तो उन्हीं की 2 लाइनें पढ़कर इसको समाप्त करेंगे और वो युवाओं के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब तक तेरा खून ना खौला, वो खून नहीं पानी, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी। तो हमें उम्मीद है कि हमारे युवा इन पंक्तियों को चरितार्थ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू आदित्य, और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रह्म कुमारी मिशन से आप और हम सभी वाकिफ हैं। बहुत स्नेह के साथ वो गिफ्ट देना चाहते हैं और हमारा सौभाग्य हमारे बीच में है। आदरणीय मित्रों, हम अपने पैनलिस्ट जो हैं उनको स्मृति चिन्ह इसके बाद प्रदान करेंगे और इसके बाद लंच ब्रेक लेंगे। लंच ब्रेक तकरीबन आधे घंटे का होगा। उसके बाद हम रीअसेंबल होंगे। रीअसेंबल होने के बाद जो हमारा अगला और बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है वो स्पोर्ट्स के ऊपर फोकस करेगा। तो आपसे ये निवेदन है, विनम्र आग्रह है कि आप लंच लेने के बाद जल्दी से जल्दी वापस आएं और ससम्मान अपना स्थान ग्रहण करें। उसके बाद 2 लगे सेशंस होंगे और फिर एक छोटा सा टी ब्रेक और वैलेडिक्टरी सेशन यानी समापन समारोह यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। मैं मोनिका चौधरी और सुमित कोल्हे जी से विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि आप आएं और इस सेशन के हमारे पार्टिसिपेंट्स को स्मृति चिन्ह भेंट करें। हमारे बीच में मौजूद आदरणीय सौरभ द्विवेदी जी, रिस्पेक्टेबल नीलेश्वर एनकिनी, अनिल मुदगल जी, पूनम कौर जी और हमारे मॉडरेटर आदित्य विजय सिंह जी। हम लंच ब्रेक पर जा रहे हैं। यंग चैंपियंस ऑफ मध्य प्रदेश इन स्पोर्ट्स एंड रियलाइजिंग एमपीज ट्रू पोटेंशियल, इस विषय पर केंद्रित होगा हमारा अगला सेशन, जो कि आज का तीसरा सत्र होगा। आधे घंटे का हम लंच ब्रेक ले रहे हैं। हमारे साथ सुबह से बने रहने के लिए और शाम तक साथ रहने के वादे के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी अच्छी तरह भोजन ग्रहण करें और शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ लौटें। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। आप अपनी तरफ बाएं हाथ पे जो गेट्स हैं
और उस तरफ से जब निकलेंगे, यदि आपको लगता है पानी ज्यादा है तो जो हमने डोम बनाया हुआ है लंच के लिए, केटरिंग वाला डोम है, वहां तक जाने के लिए बसेस की सुविधा है। आप भीगते हुए न जाएं, ये बसेस आपको वहां तक ले भी जाएंगी और लौटा कर ले भी आएंगी।